Ladies and gentlemen, so we were discussing about the Sati the other day, and I had explained you very clearly that Sati is nothing but it is a gochar, it is a transit of Saturn over your moon. So when you are born, wherever your moon is, you are extremely emotional about that house, and especially a house before and a house after the moon are the three houses in your horoscope that has highest number of emotions, right? So look at your chart. Wherever your moon is, you will be extremely emotional about that particular bhava, about that, characteristics of that bhava. For sure, there's no doubt about it. On the same time, whenever Saturn transits over a house before where the moon is and on the moon and the house next to the moon, this is known as Sadesati. Because in each zodiac sign, moon takes approximately 2.5 years. Although it goes retrograde, it takes more than that. So at times, the 7.5 year long period is also stretched to 8.5 years. So it's not always 7.5. Now, there was a question that we see, Sadasati from the Lagna or we see it from the moon, right? We see it from the Lagna and the position of the moon, right? And you can also see it from the Chandra Kundli, and the formula, the everything, the remedies remain the same. However, uh, the Saraswati first year, as I explained, I'm just revising the things. It it falls on your feet. It actually make you move from one places to another in searching of success. वो आपको भटकाता है. The first dhaiya, right, which is on your feet, and then the second dhaiya is on your mastic, which is brain. You feel blank. You feel as if nothing is working. You have no idea what to do, what not to do. And the third dhaiya is you know is giving lot of uh, effect on your mind. That's the third dhaiya. Now, I had also showed you how this Shaniki Sadasati, it works on a chart. We gave you an example. And today I will explain you more about Sadasati and Shani's Dhaiya. It is so funny that in first 4 5 years of my life, in first 4 5 years of my Jyotish life, way back in 2007, 8, 9, you know what? I'll be very honest with you that I have no idea what is a Dhaiya. What I used to think was there are three Dhaiyas and each Dhaiya is in a Sadasati. That's it. तो साढ़े तो एक ही तरह की होती है जिसमें तीन ढैयाज होते हैं. That's it. For 4 5 years I had this information. Suddenly somebody told me and somebody were discussing, let's talk about dhaiya. I said, okay, which dhaiya? The first dhaiya, the second dhaiya, or the third dhaiya of Sadasati? He said, no, not the first dhaiya, neither the second dhaiya, nor the third dhaiya. We're just talking of dhaiya. I said, what is this? This is new. You're not talking of any dhaiya of the Sadasati. I think there are three dhaiyas in the Sadasati, the first, second, and the third. But what is this third dhaiya all about? I mean, the fourth thing that you're telling me, he said that there is a dhaiya, and which is far more severe than the Sadasati. I was astonished that this is something new. It's a new concept. So then I started learning, and then I realized, and I talked to various people in my life who have gone through the Dhaiya. I asked them multiple questions. What happened? How was the life? How was the personal life? And with 5,000 consultations under my belt, I realized that it is very true that the Dhaiya is far more difficult time than the Sadasati. Far more difficult. It rips you apart completely, right? And I have never ever see. I have seen Sadasati going well
in the life of people, but I have never seen Dhaiya giving good results. Never, ever. People say, oh, it is my Saraswati, it gave me good results. I got promotion, I got this and that, although things were difficult, but not the Dhaiya. If I've met 20 odd people or 200 odd people discussing their Dhaiya, each and every one has said that it was the most difficult time of their life. और ये ढैया आता कब है? Let me show you the pictorial description, and you people will realize that it is a serious problem. So you see, suppose we make a kundli here, and let me explain you how this ढैया comes in the life. See, this is a chart, and we talk about Saraswati in the last lecture. I have a presentation for the Saraswati as well. And you see, this is Saraswati, and suppose you have, moon here. Okay, and it is a Mesha Lagna, very simple one, just like mine chart. It's a Kal Purush horoscope. Okay, and now what is Saraswati? When is Saraswati going to come? When in the Gochar, the Saturn will start transiting in Libra, 2.5 years, first year. Then on the moon, okay, 2.5 years. And then in the next house of the moon, 2.5 years. So for me, the Saraswati got over in January 2020. To be exact, I guess it was 24th or 26th of January 2020, my Saraswati got over. I was very happy. I thought, okay, fine, nothing will happen now. And then moon was from 2020, from 24th of Jan 2020 to 29th of April, 2022, there was no Saraswati for me. I was like, that's good, that's fantastic. There's no Saraswati, everything is fine. And neither the Saraswati will come for another 20-25 years. It's good, it's all fine. And then I realized that the Saturn enters the Aquarius sign. Okay, so now Saturn enters the Aquarius sign. Now, how many places is this Saturn from my moon? It's like 4 places. 1, 2, 3, and 4. Okay, and whenever Saturn transit 4 places from your moon, it is known as Chaturth Dhaiya, or known as Chaturth Dhaiya. Chaturth Dhaiya. Okay, this is known as Chaturth Dhaiya, and whenever it moves 8 places from it, so when when I'll have this Saturn in transiting here, then it will be my Ashtam Dhaiya. Ashtam Dhaiya. So अभी किनके जीवन में ढैया चल रहा है? जिनके कुंडली में क्या है? जिनका चंद्रमा जो है इस समय either it is in the sign of Cancer or in the sign of Scorpio, they are going through Dhaiya. Okay, people who have Scorpio moon, they have this Dhaiya known as Chaturth Dhaiya, and people who have Saturn, transiting 8th from the moon, they are going through the Ashtam Dhaiya. Right now, people say why 4th and the 8th house is where there's a lot of problem. You see, this 4th and 8th house are having 9:5 relationship with each other. 4 and 8 house. Okay, and you know what? You see, what is 4th house from any house?
fourth house from any house is a house of heart. It's the house of comfort. It's the house of emotions. You know, from anywhere you count four houses, especially from the moon. Moon deposits, right, all the houses, all its luck and emotions in the fourth house from itself, wherever your moon is, right? So if you want to see, suppose, I give you my example here. My moon is in the eighth house, and fourth house from it is the Aquarius. Don't you think I deal with the emotions of society? I am so emotional about society, students, you know, and my Guru Charan. 11th house is also the Guru Charan for me. So your reservoir of your emotions in your chart is the fourth house from the moon. And what is the eighth house from the moon? So you see, the eighth house is the future of your fourth house, right? Why? Because you know what? Wherever the reservoir of your emotions is, how will you manifest? What is the future of your reservoir? What is the future of the storage of your emotions? It is the eighth house, which is fifth from the fourth. So that is the future. So you ask me, see, from your lagna, fifth house is your future. So from the fourth house, which is the future? The eighth house, right? Yes or no? Yes, right? Because it is fifth from the fourth. The future, of the moon is in the eighth house from where itself is. It's not, from the fifth house where it is. It is eighth because emotions are stored in the fourth house from the moon. Moon has a very different mindset than the other planets because moon is the mind itself. Remember this. Now, whenever Saturn will transit, the fourth from the moon or eighth from the moon, which are also the moksha karka, grahas for the moon. Moon can get moksha if moon can control the fourth and the eighth house for itself. The 12th house will be no problem for the moon, right? So the fourth from the moon and the eighth for the moon is a scope of moksha. And when you try to reach moksha, what happens, right? You leave everything. Your mind wants to leave everything. Now the problem here is, let me tell you what happens when Saturn moves in the fourth or in the eighth from your moon. What is the major difference between Sade Sati and Dhaiya? You see, सबसे बड़ा difference ये है, in Sade Sati, it's a 7.5 year long time. You have three Dhaiyas, 2.5, 2.5, and 2.5. You know what? You have problems, emotional turmoils, issues, lot of things. You may even lose near and dear ones in the Sadasati. But one major difference between Sadasati and the Dhaiya is that Sadasati will give you time to recover and sort out the things. If there is a problem, if there is a mess, Sadasati will always give you time to sort things. Sadasati will give you opportunity to sort out things. Dhaiya will not give you a second or a minute to resolve the things for you. You know what? In the Dhaiya, you will not get time. You will not get time to recover. If something has to happen, it will happen so sudden, and so accidental in your life that you can't even imagine it. Like in an accident, when you fall from a cycle or a bike, you have no time. जब आप गिर जाते हो तब आपको पता लगा कि आप गिर चुके हो. आपको हल्का सा पता लगता है, you disbalance हुए और thumb. Oh, did I fall? Did I really fall? You've seen a lot of people in the after the accident say,
they're asking you kya hua hai, because they don't know the accident has already happened. That situation is a dhaiya situation. That is why it is severe. आपके साथ जो भी बुरा होगा या आप जो भी भुगतोगे, उसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है. इट इज गोइंग टू बी एक्सीडेंटल. इन Saraswati, I lost my father. It was Ketu Dasha as well. I got time. My father was sick for 1.5 months. He was hospitalized last 15 days. And on the 16th day, he passed. I knew that doctors were setting expectation that, it is MOF, multi-organ failure, things are not working, you know, although nobody wants to lose his or her father. But I knew that something is wrong. I was mentally little bit prepared, not 100%, but little bit prepared that something can go wrong. But in DHAIYA, on 29th April 2022, the DHAIYA started, and that it remained till 12th of July, until Saturn went back to Capricorn, right? And I lost my brother with no time to recover, with no time to recover at all, right? And then came the surgery with no time to, think that, okay, probably, I'll go for some medicine and see. Although a lot of people were telling me you have this medicine, that medicine, but my mentally I was so prepared that this medicine will not work. I know I have to get operated, because 2 to 3 years ago, my fellow colleagues, my gurus, they said, Navneet, you will go under a surgery, and I predicted it for myself. If you go back and see the classes of Jyotish Acharya 4, 5, Dr. Shruti is here way back, Simraji is here way back. I said that, in 2022, I'll have to go through the surgery. And way back in December last year, students who were studying with me, I just keep on telling them that I'll have a bad time. आप लोगों को मेरा साथ देना, आप मेरा साथ दीजिएगा. I knew that, such severe things happen in the DHAIYA. And you know what happens in the DHAIYA is the loss is a loss which cannot be recovered. You will get such losses. आपका कोई बहन भाई कोई ना कोई ऐसा चला जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब कोई कजन चला गया, या आपके हस्बैंड का कोई भाई चला गया, आपके हस्बैंड या पे आपके सिस्टर का कोई आगे रिश्तेदार चला गया जिसके आप क्लोज थे, जिसके जिसके कारण आपके घर में एक अजीब सा दुख वाला माहौल आएगा. दैट्स DHAIYA. DHAIYA क्या कर रहा है? जब घर में ऐसी कोई मृत्यु होती है ना, इंसान मोक्ष के बारे में सोचने लग जाता है कि जीवन मरण है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ये कैसे हो गया, लाइफ में रखा क्या है, कब किसी ने कहाँ चले जाना है. All these thoughts come in mind when you go to a cremation ground, and it remains in your mind for 3-4 days, 6-7 days, week, 10 days, and then you're back to the normal life, and then all these thoughts are gone. But if somebody dies at home, or somebody whom you love so much, who is close to you, he dies or she dies, then you're always thinking, at least once a week, this thought comes in your mind. This is known as Chaturth or the Ashtam DHAIYA. Making you forcefully think about moksha. यार ये जीवन है क्या, ये जीवन चल क्या रहा है, मतलब ये क्या, कब कब किसी का अपने हार्ट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कब सांसें रुक जाएंगी, कब हार्ट रुक जाएगा, और आप चलाना भी चाहोगे तो भी नहीं चलेगा. The only body part you have no control is your heart. You have to be a yogi to control your heart. You have to be a yogi to control your pulse. But it's very difficult in Kali Yuga. It can stop any time, and it will not give you any signal. It will give you a pain and it will stop. That's it. You're done. People will keep pumping. It will not recover. Such things are seen in DHAIYA. You always have these palpitations. You always have कि आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा, आपकी फैमिली को तो नहीं कुछ हो जाएगा, आपके बच्चे को तो नहीं कुछ हो जाएगा, आपके परिवार में किसी को कुछ तो नहीं हो जाएगा. Insecurity, घबराहट, डर, fear. And in that fear, you start praying. This is the first thing that DHAIYA does. Because it will give you some instances in your life
from where it is very difficult to recover. It is very difficult to recover. It will give you certain, you know what, in DHAIYA, you will plan 20 things in a day, 20 things, and you will not execute even one in the DHAIYA. You feel so restricted as if, जैसे आपके इमोशंस के स्टोर के ऊपर किसी ने ताला लगा दिया होता है. प्रैक्टिकलिटी जो है वो लाइफ में से खत्म होने लगती है. यू लूज द प्रैक्टिकलिटी. You feel so insecure about your emotions, about your friend, wife, husband, children, kids, business. You always feel so much of insecurity, so much of insecurity. These are some of the major issues that you feel and you face in the DHAIYA. What next will happen? Like, in the Sati, you also lose little bit of your health, but in DHAIYA, you lose major part of your health. First thing that happens in the DHAIYA is your skin goes bad. You always have skin issues. या तो रैशेज होते रहेंगे, खारिश होती रहेगी, चेहरे पे छाइयां आ जाएंगी. ये शनि जब भी खराब होगा ना, सबसे पहले चेहरे को खराब करेगा. आपको चेहरे पे छाइयां ले आएगा, आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स ले आएगा. These are the, the moment किसी के चेहरे पे बहुत सारी छाइयां होंगी, आप उसकी कुंडली जाकर देखिए, right? That person will be going through a DHAIYA. 99.9% of the times, face ke, you're under your cheeks, over your cheeks, you will have those black skin coming, right? Your eyes the black circles will come. Suddenly you realize, there's so much of stress and tension that Saturn would start showing its colors on your face. That's what happens with the DHAIYA. You will always feel tired, you look tired. At times, a lot of people will tell me ki, Navneet sir, aap bahut tired lag rahe ho. At times, I'm not tired also, but people are still telling me you look very tired. And that is the effect of the DHAIYA. The DHAIYA has started. The DHAIYA has started. It will start showing its colors again, effect again after 17th of January 2023 till March 2025, when it will enter the Aquarius sign completely and will remain there. Whatever retrogression happens, it will happen in the Aquarius one. It is not going to go back to Capricorn again. That's when the effect started. This is what happened when it was around 29th April to 12th of July. Although I was visiting various spiritual places for doing rituals of my brother, but I never wanted to visit such places for doing the rituals. I would have gone like that only. Why do I, take the asthis of my brother, my twin brother, and go to Haridwar? You can imagine the kind of feeling, that you have at that point of time. When you collect those asthis in the ashes, it's very difficult. It's very difficult for someone for whom you were together in the womb also. Wahan ka saath hai. And 42 years, not even a single day when we never had a breakfast together. These are irreparable losses. Inevitable. It's not possible. It's a final loss. And then you have to be back to the routine and start working within 10-15 days. And you have to show up to your kids and everyone. That's another difficult thing. And you start losing weight, you start losing health for no reason. There's not even a single event, that you can enjoy. There are some losses in life after which आपको लगता है कि चाहे 10 साल बाद भी दिवाली आ जाए या 20 साल बाद भी दिवाली आ जाए, वो मजा नहीं होगा, चाहे कोई भी खुशी हो जाए. चाहे नमन की शादी हो, नमन का कोई भी खुशी आए, वो मजा नहीं होगा. Something is missing forever. This is what DHAIYA. And then when you have such feelings, you start thinking कि life है क्या. You become forgiving. आपको लोगों पे गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि आप अपनी तकदीर पे ही बहुत ज्यादा गुस्सा कर चुके होते हो. Then you said, it's okay. People will cheat, people will do nuisance, people will tell this, people will tell that.
you stop reacting after such tragedies in life. That's what happened with the Daiya. Daiya will teach you certain things after which you become extremely forgiving. You let go things. It is just as if you are carrying a backpack of 40 kgs on your body and then walking. This is the kind of feeling that you get in a day. You travel, you keep moving. When you want to travel, you travel. Okay. And you get tired and want to come back home. When you come back home, you get tired sitting at home and you want to travel. This is the ugliest thing that happened in the day. You travel for 4 days, you want to rush back home. You come home, stay at home for 15 days, you want to travel. That's the tragedy. You don't like traveling, you don't like sitting home. Where should you go? What should you do? This is what happens in the day. It doesn't give you time. It doesn't give you time at all. If it is happening in the sixth house, your Saturn is traveling in the sixth house, the problem is with legal cases. I've seen a lot of legal cases coming. Although you may win, you see, Sarvik is saying, my Dhaiya has made me totally feelingless and emotionless, feeling tiring every time. Exactly what you're saying, Guruji. It is the reality. It is the truth. This is the complete reality, ladies and gentlemen. The Dhaiya, how many of you have gone through this Dhaiya? Sunny saying, I realized I was going through this, and then a few things were going on and just wanted to leave everything here and come back to India. Exactly. You know what, Sunny? People in the Dhaiya, they want to come back to their motherland from the foreign, but when they come to the motherland, they want to go back to the foreign again. You are in such a state of life कि आपका घूमने को मन करेगा, चलो चलो गाड़ी उठाते हैं, पूरे जोश से आप गाड़ी उठाओगे, आप जाओगे, घूमोगे और आपको बोलेगा मुझे घर जाना है. She lost brother-in-law 2 months back, and then Dr. Shruti, you also lost your sister-in-law 2 months back. So brother-in-law gone, sister-in-law gone, and you see close deaths. You see, कि आपको जिंदगी ये दिखाती है कि जिंदगी कुछ नहीं है, 1 मिनट की गारंटी नहीं. See, Preeti Singh wanted to get back to the same company. You see? And when you go to that company, you look for another company. आपको कोई और कंपनी चाहिए वहां जाके. जैसे अगर आप गाड़ी खरीदते हो ना धैया में, मैं बताता हूँ क्या होता है. गाड़ी खरीदोगे, 1 साल चलाओगे, आपका बेचने को मन करेगा, आप बेच दोगे, ठीक है, नई गाड़ी लेने जाओगे, लेकिन आपको वही पुरानी गाड़ी की याद आएगी, मुझे वही चाहिए थी, वही लेनी थी, मैंने क्यों बेच दी. Can you imagine the state of mind? So confusing and pathetic. Yeah, no time to recover, Preeti say. ढैया टाइम ही नहीं देता रिकवर करने का. भगवान राम बचा सकते हैं. ढैया की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? सबसे पहली रेमेडी जो शास्त्रों में लिखी हुई है वो ये लिखी है कि ऑन एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे आपको प्योर सात्विक रहना है. प्योर सात्विक रहने का मतलब है नॉट इवन अनियन गार्लिक. प्योर सात्विक ऑन एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे. आपके डाइट में, ठीक है, आप कहते हैं वेजिटेरियन हो, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उससे भी ऊपर जाना है. यू हैव टू बिहेव लाइक अ वैष्णव. You have to behave like a complete Vaishnava on every Tuesday and Saturday. Must. घर पे कोई भी खाना, कोई भी परिवार, पूरा का पूरा परिवार प्योर सात्विक रहे. लहसुन प्याज से आप परहेज करिए और राम नाम का जाप करिए जितना कर सकते हैं ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर रेमेडी, other benefit transit and placement should help. It will certainly help. सनी पक्का हेल्प करते हैं 100%. ऐसा नहीं है कि
ढैया इज अ कंप्लीट डिजास्टर ओनली, ऐसा नहीं है। लेकिन अदर जैसी दशा है, पैसा भी मिलेगा, गाड़ी भी ले लोगे, घर भी ले लोगे, नई गाड़ियां भी खरीद लोगे, कपड़े खरीदोगे, शॉपिंग करोगे, लेकिन मन में ना शांति नहीं होगी। जैसे मन को ना दोनों हाथों से कपड़े की तरह निचोड़ा जा रहा है ना, एवरी थर्ड डे वॉशरूम में जाते मुंह धोते हुए सोचोगे यार क्या यही जीवन है, अपनी तरफ देखते हुए सोचोगे क्या यही जीवन है, क्या मैं यहीं पे रहना हूँ कि मुझे वापस जाना है। अपनी पर्सनल मूवमेंट्स में वॉशरूम में बैठे हुए मुंह धोते हुए आप अकेले बैठे हुए सोचोगे, आपको लोग बोलेंगे सनी क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और आप अंदर, आपके अंदर एक ट्रमोइल है, आप सोच रहे हो कि वापस इंडिया चले जाओ, वापस इंडिया चले जाओ, लेकिन फिर सोचो इंडिया जाके क्या करूं, मैं क्या करूंगा। जैसे ही जल के पास आओगे, मैंने मुंह धोने की बात क्यों की, चंद्र, जैसे ही पानी पीते हुए, नहाते हुए, नहाने के बाद अपने फेस पे जल डालते हुए आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपका मेंटल टर्मोइल बढ़ेगा व्हेन यू कम क्लोज टू द मून। जल तत्व के पास आते ही आपको फीलिंग होती है। शिल्पा जी कह रही हैं गुरुजी, सो आफ्टर योर साढ़े fourth from the moon is the start of Chaturth Dhyaya, and then again transit eighth from the moon, then it is done. It's every time when the Saturn will transit, every time when the Saturn, and Saturn takes 2.5 years to transit in one sign. So शनि की साढ़े के 2.5 साल का गैप आता है, साढ़े के बाद फिर ढैया शुरू हो जाता है, फिर 10 साल का गैप आता है, फिर ढैया शुरू हो जाता है। ठीक है ना, 7.5 साल का गैप आएगा, सॉरी, फिर ढैया शुरू हो जाए। यू अंडरस्टैंड। सो 7.5 के बाद 2.5 साल कुछ नहीं होता, फिर ढैया शुरू, फिर ढैया खत्म होने के फिर 7.5 साल कुछ नहीं होता, फिर से ढैया शुरू। या 12.5 years every 30 years is a turmoil, it's a teaching, it's a pattern, it's a pattern, it's a pattern, सफरिंग है, इट्स सफरिंग। मुझे तो लगता है 30 साल के अंदर 20 साल की सफरिंग रहती है, क्योंकि 30 साल में 2 सर्कल कवर हो जाते हैं 7.5। चेक करना कभी, देखना, 20 साल की सफरिंग मिनिमम है। लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग 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 फॉर नो रीजन। दैट इज व्हाई वी आर हियर। आई एम टॉरस and the moon is in Cancer. What I am Taurus Lagna and the moon is in the Cancer. Am I having Dhaiya right now? If your moon is in the Cancer, you are in the Ashtam Dhaiya. If your moon is in the Cancer, you are going through the Ashtam Dhaiya. Lot of learning will happen. You will meet your guru, spirituality, because जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान बचाने के लिए किसी को भेजते हैं। No, no, they are not others. See, these are the most severe ones, Parul. I mean, transits तो 12 होंगे उसके 30 सालों में, लेकिन इन 12 में से ये जो 5 ट्रांजिट्स हैं ये सबसे डिफिकल्ट है, द रिमेनिंग 7 आर नॉट। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर श्रुति, आप सबके साथ हूँ जिन जिन का ढैया है, मेरा खुद का भी ढैया है, लेकिन आप मेरे साथ हैं। कल आपके मैसेजेस से मुझे पूरा फील हो रहा था कि आप मेरे साथ हैं। माय ढैया, माय यंगर सिस्टर पास्ट अवे, दिशा कह रहे हैं यार। केतु महादशा एंड ढैया हैपनिंग टुगेदर राइट नाउ, या आई नो दैट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, बेबस और हेल्पलेस फील करता है बंदा। क्या है ये, क्या है, यू नो रिजल्ट सिर्फ एक ही है कि 24 घंटे एक ही चीज करनी है आपको, राम 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 श्री राम 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 राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, राम से बड़ा राम का नाम, राम का जो नाम है वो राम से भी बड़ा है।
ये बात हनुमान जी ने राम जी को बोली थी कि राम जी, मेरी मुश्किल हालातों में आप साथ नहीं थे, लेकिन आपका नाम साथ था। और वर्ड राम जो है, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। अग्नि है, रा, रा मीन्स अग्नि। इट गिव्स यू दैट फायर। वो कहते हैं ना, दैट स्पार्क इज मिसिंग, दैट फायर इन इज मिसिंग। इफ द फायर और स्पार्क इज मिसिंग इन योर लाइफ, all you have to do is just chant Ram. You'll get your fire back. You'll get your spark back. One single word that has ability to bring back your fire is Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. That's it. I have moon in the 8th house, Libra ascendant, and it is Chaturthi Daya for me. No, no, it's not about what ascendant. Tell me the Rashi of your moon. So people who are in the Scorpio Rashi, or they have, the Cancer Rashi, they are in the Dhaiya, right? You are not, Nitika. If you are in the Taurus moon, then Taurus moon is not in the Dhaiya. I'm going through Sadasati and will enter second phase next year. Feeling scared, as Guruji said, my mind will go blank. I am Aquarius moon sign. Nothing will go blank. You have a teacher, you have a guru, you have a mentor, right? It is problem is with those people who have nothing. They are like animals who come to us and say, nothing is working. I need this, I need that. you know I need to control this person, I need to control that, I need promotion. Who has so much into lobh, kam, krodh, all these things. Then it's a problem. It's a problem. But when you give up, you said, okay, jahi vidhi rakhe Ram, tahi vidhi rahiye. The way Ram will keep me, I will be like that. I know what losses I'm going to have in this day. I have seen them. I can calculate them, but I don't want to think about it. I just want to think of today and tomorrow, not more than that. The first remedy that you should do in a Dhaiya or in a Sadasati is stop thinking about 1 week. Just think of today and tomorrow. Live day by day. That's it. Isn't if you start living day by day, it will solve 99% of your problems? What will happen next week? What will happen next month? What will happen in February? You are in trouble, no? Who knows what will happen? And why do you want to know what will happen? Just know that tomorrow this will be the nakshatra, and these many chants you will do tomorrow, and you can plan for a good vegetable that this will be cooked tomorrow. That's it. Plan this much only. Or you can plan that you will wear this particular sweatshirt or a coat or a jeans tomorrow, or you'll have a good cup of coffee tomorrow. Just plan this much. You bought a car, and well, how will the EMI go? How will this happen? You'll have a job or not? Don't think about it. Guruji, I was born with moon and ascendant in the Mesha Rashi. I am in the Dhaiya, Guruji. Spiritual bacteria are keeping me moving forward. Otherwise, no idea what is happening in the life. That is so correct. You will seriously have no idea what is happening in the life. पता ही नहीं लगता है क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. और आप ये देखो ना, आप इससे 2.5 साल पहले आप साढ़े खत्म हुई होगी आपकी. साढ़े में आपको आइडिया होगा कि क्या हो रहा है आपके साथ. बट इन ढैया यू हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग. साढ़े was giving you time to recover, to think, but Dhaiya is not giving you time. I'm in the esteemed Dhaiya. I have 1,000 times planned my day. After every third day, I lose the nice routine. Yes. Yeah, I lost my father in the first Sadasati. Yeah. Such losses are seen in the Sadasati, Ketu Dasha. ये थीम है साढ़े की, केतु दशा की. इसने आपके पेरेंट्स में से किसी को ले जाना है. टोटल इमोशनल टर्मोइल, कांट इवन एक्सप्लेन टू एनीवन. वही तो बात है. आपको पता है इस दुनिया में ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या टीचर या गुरु, उसकी 5-6 कंडीशंस हैं जो लोगों के मन में है. पहली, वो कभी दुखी नहीं होना चाहिए. पीपल हु आर इन एस्ट्रोलॉजी बोले आप ही दुखी हो, आप तो सबको बताते हो, आप कैसे दुखी हो सकते हो. उसको ये नहीं पता कि ज्योतिषी
जो है वो सोल्यूशन नहीं देता है, वो गाइड करता है। अब जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है तो वो मेरे भाग्य में लिखा है। अगर मेरे को दर्द हो रही है तो मुझे ही सहना है, और वो किसी रीजन से हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को कभी दर्द नहीं होता। यू नो, लॉट ऑफ पीपल विल थिंक, अरे इसका कैसे कोई मर गया, इसका तो कोई मरना ही नहीं चाहिए था, इसको पता नहीं था। अगर पता भी होता तो मरने को बचा सकता था क्या? महादेव हूं क्या? उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। तभी तो वो लिख रहा है सार्विक। क्या लिख रहा है? सर मैं गुरुजी मैं किसी को बता भी नहीं सकता, एंड दिस इज द रियलिटी। वो बता ही नहीं सकता। ढैया में आप ऐसे ऐसे टर्मोइल्स अपनी लाइफ में देखोगे जो आप किसी को बता ही नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या तकलीफ है। वो बोले सब ठीक तो है यार, तू ज्यादा सोच रहा है यार, दिमाग। आई मीन पीपल विल नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू योर इमोशंस। दैट्स व्हाट हैपन इन द ढैया। करेक्ट नंदिता जी, द गैप बिटवीन Sadasati and ढैया is 2.5 years. So I had to take that call to drop all big plans and live day by day, and things maintain sanity. Today's explanation, I am at peace. You should be peace. Can we pray to Shiva as my Dhaiya starts next? Of course you can pray to Shiva, because Shiva all the time prays to Ram. The only mantra Shiva is doing 24/7 is Ram, 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 Ram. Go read Shiv Mahapuran. Somebody asked Shiva, Shiva, what mantra are you doing? I said, I do only one mantra. What is that mantra? Shiva is chanting 24/7, 365 days, only one word. Ram, 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 Ram. Also, if you pray to Shiva, Ram will be happy. And if you pray to Ram, Shiva will be happy. Now you do where you want to pray. You pray both will be happy. You see? That's where is. And what is Ram doing? What is Ram chanting? Shiv, 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 Shiv. That's what is happening. Shri Ram, before killing Ravana, went to Rameshwaram, right? Shivling, ऋषि अगस्त्य. You see, राम जो है वो शिवजी को जप रहे हैं और शिवजी राम को जप रहे हैं. एंड आप जिसको मर्जी जपो, राम को जपोगे तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, शिवजी को जपोगे तो राम प्रसन्न हो जाएंगे, बिकॉज दोनों एक दूसरे का मंत्र करते हैं. सो यू कैन डू श्री राम, यू कैन डू ओम नमः शिवाय, वट एवर यू want to do, wherever you feel peace, just keep doing 24/7, 365 days, no stoppage, without a disconnect. Give me feedback in 6 months. Yes, Parul. Guruji, I've heard that like after Saraswati ends, right? Like आपको ना कुछ मिलता है because you have gone through so much that Shani gives you something, like something big or something that you have been wanting. Yeah. तो ऐसे क्या कहते हैं ढैया में भी ऐसा होता है क्या? Because the reason I'm asking is that when my ढैया ended, I actually got a job and I had the job issue like during my ढैया. वो सबसे बड़ा thing था. And then moreover my moon is in the first house, so my ढैया was happening in the home house, right? Like fourth house में. So fourth house was never satisfying. It was always like घर क्यों? एक I mean, I क्वेश्चन didn't पूछूं want to come आपसे, back to home. एक आपसे क्वेश्चन पूछूं. हाँ आपको जी. दिन में 3 बार आलू पूड़ी मिल रही हो, सुबह आलू पूड़ी मिली, दोपहर को भी आलू पूड़ी मिली, रात को भी आलू पूड़ी मिली, साथ में हलवा भी मिला, लस्सी भी मिली, आपने बड़ा खाया, एंजॉय किया. हाँ, आपको अगले दिन फिर आलू पूड़ी लस्सी मिली, लेकिन फिर एक बार क्या हुआ, आपको 2.5 महीने कुछ नहीं मिला. 2.5 महीने कुछ नहीं मिला, और 2.5 महीने के बाद आपको एक आलू पूड़ी और लस्सी मिली. तो आप क्या बोलोगे? मुझे 2.5 महीने के बाद ना आलू पूड़ी और लस्सी मिली. So you, what I'm trying to tell you is, you, when it is good time, you get certain things in life that wow, that dasha was good. But the moment when life, comes to term and it's settling down, जैसे ही आपको कोई चीज मिलती है, आपको लगता है शनि ने आपको जाते जाते चीज दी है, या ढैया के खत्म होते ही आपको ये चीज मिली.
इट इज एक्चुअली द सिग्नल ऑफ एन ओके टाइम, अ गुड टाइम कमिंग। आपको कुछ मिलता है, आप उस रिवॉर्ड को, अब मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर मैं आपके साथ जुड़ा होता आपके ढैया खत्म होने से पहले 2 महीने पहले, और आपको एक मंत्र बताता और आपको आशीर्वाद देता, आपके मन में ये नहीं जाता कि गुरुजी के जुड़ने के बाद मुझे ये मिला? आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना? ये होता क्या है, इट इज नॉट नेसेसरली कि आपको शनि की साढ़े सती जाते जाते कुछ देगी या ढैया, बट डेफिनेटली जब अच्छा समय आने लगता है तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने दे दिया। आप दोनों तरफ से समझ सकते हो। अगर आप It's a अपनी वाली चीज, perception. इट्स नॉट अ परसेप्शन, इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। अब आप, एक गिलास है उसको आधा भरा कह लो या आधा खाली कह लो, वो आपकी सोच है, राइट? आप शनि की साढ़े सती को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, मैं भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जाते जाते कुछ दे रही है, इसलिए क्योंकि आपका अच्छा टाइम सामने है, नॉर्मल टाइम सामने। सो इट इज अप टू यू, एंड इट इज अ गुड होप टू कीप कि शनि की साढ़े सती या ढैया जाते हुए आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देगा। नॉर्मल लाइफ इज अ ब्लेसिंग, यू नो, सी लाइफ इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग ना। आज मेरे से कोई बोलता है कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये आ गया, मैं उसको पता क्या बोलता हूँ? सबसे बढ़िया बात है कि एटलीस्ट तुम जिंदा हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके पास एफर्ट करने का मौका है, दिमाग चलाने का मौका है, आपके पास गुरु है, टीचर है, सब कुछ है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है? इसके अलावा तो जो आपको चीजें चाहिए लाइफ में, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। आप किसी से प्यार करते हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, किसी पे मरते हो, और उसी इंसान के 5 साल बाद उस इंसान को आप मारने के लिए भी रेडी हो जाते हो। आजकल की ये मोहब्बत है। जब आप किसी से वीकेंड पे लिव इन रिलेशनशिप में या अपनी गर्लफ्रेंड को 2 दिन या 3 दिन के लिए मिलने जाते हो, उसके साथ 3 दिन टाइम बिताते हो, और वापसी पे घर आते हुए आपको उसको ड्रॉप करने की जल्दी होती है, और उसके घर पे या उसके पीजी पे उसको ड्रॉप करने के बाद जब आप रिलैक्स्ड फील करते हो, दैट मीन्स वो प्यार नहीं है, वो प्यार का शोषण है। आप मेरी बात को समझिए। इन इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, इन इच्छाओं की तो कोई अंत ही नहीं है, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। नॉर्मल लाइफ पता है किसे कहते हैं? जो हम सब ढैया में जी रहे हैं, कि हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे पांव चल रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है, हमारी धड़कनें चल रही हैं, दैट्स नॉर्मल, दैट्स इट। इसके बाद सब कुछ अब नॉर्मल ही है। आपके सारे रिश्ते अब नॉर्मल है, आपका सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है, वो भगवान के साथ रिश्ता है, वो आपकी अंतरात्मा के साथ रिश्ता है। जिस दिन आपको वो समझ में आ गया, आपको लगेगा कि हर एक सिचुएशन में मेरी लाइफ नॉर्मल ही, कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, मैं अपने कर्मों का भोग रहा हूँ, दैट्स इट। वो होना ही है, लेकिन मैं अपना कांस्टेंट एफर्ट नहीं छोड़ूंगा। कभी भी अपनी लाइफ को अब नॉर्मल मत कहिए, लाइफ इज नॉर्मल। जब तक आप जिंदा है, लाइफ इज नॉर्मल। जो इस दुनिया से चला गया, उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, वो गया, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ करने की, इट्स ओवर। You should thank to God early in the morning that you are living. For, for 6 months after my brother's death, I used to pinch myself in the morning to confirm that I am alive. That's not normal. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Everything is normal, Sarvik. Everything is normal. Get up and start working. Yeah, Swati. सर मैं अपना चार्ट देख रही थी, मैं एक चीज रिलेट नहीं कर पा रही उसमें। बताइए। मेरी 37 में शादी हुई। जी। ओके एंड मतलब अप्स एंड डाउन रेगुलर जैसे आप कह रहे हैं ना, सो आई थिंक आई कुड स्टेयर थ्रू एवरीथिंग, ऑल वाज फाइन। जब 37 खत्म हुई तब मेरी लाइफ का अगर मैं बोलूँ तो सबसे मुश्किल पीरियड आया। जी। और जो ढैया का पीरियड है वो अपेरेंटली बहुत अच्छा पीरियड गया, जी। मेंटली इमोशनली। तो मतलब जो एक रिलीफ पीरियड होना चाहिए था शायद टर्मोइल के बीच में, वो सबसे ट्रोमैटिक था। जी। आपकी तो दशाएं चेक करनी पड़ेंगी स्वाति जी, कि आपकी दशाएं क्या हैं, बट
मोर ऑफन आपके बड़े अच्छे कर्म होंगे कि अगर आपका ढैया अच्छा गया। आई थिंक इट्स 1 in 1 million जिसका ढैया अच्छा जाता है। तो आई एम श्योर कि आपके संतान के या आपके हस्बैंड के या घर में किसी ना किसी के कर्म या आपके अपने कर्म बहुत ही शानदार होंगे, जिसकी वजह से आपको ढैया में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। Otherwise, this Dhaiya has capability to 99.99% to give lot of turmoil. You can share ओके। your chart later on, in the group. So I have मेरे बहुत से धनुंधर हैं जो आपको बिल्कुल सही जवाब देंगे, and I'll also give you the comment. ठीक है सर, आई विल। ठीक है। मतलब मेरे लिए कंफ्यूजिंग, ढैया निकल गया वो तो ठीक है, अच्छा गया, मेंटली भी होती है कोई चीजें, बट जो दोनों के बीच का पीरियड नॉर्मल होना चाहिए था, दैट वाज ट्रिमेंडसली बैड, लाइक फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। Then तो there is a possibility that you might require a birth time rectification. 100%. ओके। Yeah. Under such conditions, when इतनी बड़ी चीजें मैच नहीं करती हैं, तो उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सब ठीक है। मतलब बर्थ टाइम को तो लेके माय फादर हैज बीन वेरी पर्टिकुलर, सो आई नो कि वो एक आध मिनट का फर्क हो सकता है, दो तीन, एक उससे ज्यादा का नहीं है। Yeah, so बट at आई times, शेयर, आई yeah, so we'll शेयर द see what चार्ट। happens. Yeah. ठीक है सर। Yes, Nandita ji. Guruji, my question is regarding this gap between the Dhaiya and the Sade Sati. So my Sade Sati ended in 2017, Yeah. and I am currently going to the Dhaiya. So actually, the gap is almost 4 years, you could say. So that is why I was asking the question: that is it always only 2.5 years? Can it be more? No, you're calculating something wrong. It is always 2.5 years. It cannot be 4 years. So my moon is in Libra, and currently, so Libra last Sade Sati ended Yeah, in so your Dhaiya will be over by January 2023. So you're going through the Dhaiya, and your Yeah. Dhaiya will be over. So it is the gap to 2.5 years ka hi hai na, because your Dhaiya started in 2020 again. Acha, okay, fine, got it. All right, thank you. Yes, Nitya. Guruji, going by your chart, Guruji, so that means going by whatever you said, for the next 2.5 years, you will be going to the fourth Dhaiya. Is my Yes. understanding right, Guruji? Absolutely right. Okay. And my second question was, Guruji, the fourth Dhaiya and the eighth Dhaiya, will it be equally turbulent, or the turmoil will be same? The eighth Dhaiya is more traumatic as compared to the fourth. Oh, Okay, if you want to ask me which Dhaiya is more traumatic, it's the eighth Dhaiya. oh. Because Saturn is very powerful, eighth from the moon. Okay. So it's a good question, fantastic question. Out of these fourth, Chaturth and Ashtam Dhaiya, which is, more stronger Dhaiya, it's the eighth Dhaiya. So if we have to put an approximate percentage, Guruji, can we say it is 50% more traumatic than the fourth Dhaiya? You can say 30 to 40% more. Okay. Okay. Thanks, Guruji. And that is purely based on my experience. It is not written anywhere. Okay. Thanks, Guruji. Okay. Who's this name with hi? Can you just unmute yourself and say something? Hare Krishna Guruji, Jyotish. Yeah, Jyoti, I mean, you can write your name because hi is... Yes, मैंने लैपटॉप में स्टार्ट किया है, वो फोन थोड़ा बंद था तो उसमें सब सेव करना भूल गई। गुरुजी मुझे ये पूछना था, अभी मेरे चार्ट में कैप्रिकॉर्न में चंद्र है, मून, और 9th हाउस में एक्वेरियस में सैटर्न है। तो आपका कैप्रिकॉर्न का मून है ना आपका, तो आपका शनि की 6.5 का लास्ट चरण चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है। सो आप पिछले 5 साल से शनि की 6.5 में। ओके, 17 जनवरी को पूरा होगा इसका। 17 जनवरी को 2 ढैया कंप्लीट हो जाएगा, 3rd ढैया शुरू होगा आपका, लास्ट फाइनल ढैया ऑफ द 6.5। ओ बाप रे, यानी और स्ट्रगल बाकी है।
कोई स्ट्रगल नहीं है, इट्स अ लर्निंग फेस, बट लास्ट ढैया जो है इतना सिवियर नहीं होता है। हम्म, ठीक है, डोंट ओके वरी। ओके, थैंक यू यस मनस। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी वो आपके बर्थ चार्ट के से उससे मतलब कुछ पूछना था। जी जब ढैया स्टार्ट हुआ था आपका अभी कुछ टाइम पहले जब आपके ब्रदर पास हुए थे, जी देन उस आपने बताया था ना कि डेथ अगर देखते हैं तो कुछ सर्किट बनता है ट्रांजिट में और दशा वगैरह में, तो ऐसा कुछ सर्किट बना था उस टाइम? उनकी कुंडली में, उनकी वाइफ की कुंडली में बना था। मैंने और रिचा मैम ने बहुत रिसर्च किया था इस पे। तो उनकी कुंडली और उनकी वाइफ की कुंडली में पूरा सर्किट बनता था, उनकी डॉक्टर्स की कुंडली में भी सर्किट बनता था, और मेरी कुंडली में नवमांश में भी बनता था। बट आई एम नॉट टीचिंग डेथ टुडे। ओके गुरुजी। लॉन्जिविटी एंड डेथ इज अ वेरी इलेबोरेटेड सब्जेक्ट, और So, वो गुरु बिल्कुल एंड में सिखाया जाता है ताकि आप उल्टी सीधी डेथ्स को प्रिडिक्ट मत करो, कैलकुलेशंस मत करो। यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट अ लॉन्जिविटी। ओके गुरुजी। गुरुजी तो मतलब इसीलिए सेकंड हाउस फैमिली का और सेवेंथ हाउस वाइफ का मारक इसलिए कहा जाता है आई थिंक, मतलब क्योंकि कुंडलियां मैच हो जाता है, मतलब इम्पैक्ट फैमिली का भी रहता है। बहुत ज्यादा। कम सेकंड हाउस रिश्तेदारी का भी है, आपकी वाणी का भी है, आपके टेस्ट बड्स का भी है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है और इनकम का है। जब इन चीजों में कमी आएगी तो आप रोज जीते हो और रोज मरते हो। ओके गुरुजी। ठीक है जी। जी पारुल जी। Guruji, I had a follow-up question with what Nitya ji had asked, that fourth or eighth में we understood that the eighth is the most difficult one. तो Yeah. अगर किसी का अष्टम ढैया जो है वो eighth house में ही पड़ रही है, where Saturn is the कारका, right? Yeah. How do you fructify those results? Like because eighth house का Saturn वहां पे कारक नाश considered, भाव नहीं होगा। हाँ, ये ना कारक नाश भाव जो है वो ट्रांजिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, स्पेशली सैटर्न के इस ढैया वाले ट्रांजिट पे। तो उसको फ्रूटिफाई कैसे करेंगे? तो अगर वो अष्टम का इट इज शनि है मोर तो वो, सिवियर। सी, हो क्या रहा है कि शनि और स्ट्रांग हो रहा है। जिन जिन भावों में शनि स्ट्रांग होगा वहां पर आपका अष्टम ढैया और सिवियर होगा। जिन जिन भावों में चंद्र स्ट्रांग होगा वहां पर ढैया का इफेक्ट कम होगा। तो आप वहां पे समझ जो रहे हैं? अष्टम, तो अष्टम का अगर शनि जब वो एट्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा और वो ढैया भी होगा, तो उस टाइम पे जो है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग्स होंगी, राइट? लाइक ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, वेरी स्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दैट इज अगेन सीन फ्रॉम द एस्पेक्ट कि एट्थ का है जो वो टेंथ को देगा, तो करियर को लेकर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली यस, करियर को लेके रिस्ट्रिक्शंस फील करोगे, ट्रांसफॉर्मेशंस फील करोगे। उसके बाद आप सेकंड फैमिली क्या हाउस, आएगा, या फूड की फैमिली, हैबिट्स आपकी बदल जाएंगी। फैमिली का बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन आएगा, चेंजेस आएंगे। सो ये सब चीजें आती हैं। ओके। एंड देन फिफ्थ हाउस को अगेन वो या तो मंत्र शास्त्र चीज करेगा, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर योर यस, चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली। गॉट इट। तो हम लोगों को जहाँ पे वो होगा उसके एस्पेक्ट को और जिस हाउस में बैठा उससे उसके तत्वों को लेकर वील हैव टू थिंक अबाउट दैट। सर्टेनली यस। ओके, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। यस आशीष। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे गुरुजी, कृष्ण। मेरे को जो समझ आता है वो ये है कि एक तो अगर आप असेंडेंट से ट्रांजिट्स देखते हो तो वो आपकी आउटर वर्ल्ड में सिचुएशंस को सिग्निफाई करता है, और अगर आप मून से देखते हैं ट्रांजिट्स तो वो हमारा परसेप्शन क्या हो रहा है उस चीज को, हमारा मेंटल स्टेट क्या है वो डिफाइन करता है। तो ये करेक्ट। जितने भी सैटर्न्स के ट्रांजिट हम देख रहे हैं, मैंने नोटिस किया हम इसमें मून को सेंट्रल थीम में लेके चल रहे हैं। जी तो नो मैटर कि बाहर क्या हो, मोस्टली हमको अंदर मेंटल स्ट्रेस या मेंटल बोलते हैं डिस्पेयर ज्यादा होगा। जी, ये इंटरप्रेट करना ठीक है या फिर बिल्कुल आपको? ठीक है। देखिए, क्योंकि सैटर्न करता ही थॉट प्रोसेस पे काम है, जी ठीक है ना। सो जी गुरु ये इसने आपके मेंटल स्थिति को ही खराब करना है। दैट इज व्हाई दिस सारस्वती का जो सेंटर पॉइंट है, जो एपी सेंटर है, वो चंद्र है। ग्रहों के पास जी गुरु केवल जी। एक ही टेक्निक है अपने आपके कर्मों को सेटल करवाने की, दैट इज वर्किंग ऑन योर थॉट प्रोसेस। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई
कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दशा या आपकी साढ़े साथी का आप पे कोई इफेक्ट ना आए, आप अपने मन को स्ट्रांग कर लो बस। तो गुरुजी ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा कि इतने हार्श सर्कमस्टेंसेस जो होंगे इसमें मोस्टली कभी कभी कुछ शायद एक्सटर्नली होगा भी नहीं, लेकिन हम अंदर ही अंदर काफी मेंटल प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कहा जा सकता है? बिल्कुल ओके, कहा जा सकता है, 100% कहा जा सकता है। यही चीज तो थैंक मैं यू। सार्विक को समझाने की कोशिश कर रहा था। जी जी, थैंक यू गुरुजी। And जी Ashish ji, उसमें गुरुजी एक 1 second I जी wanted to say add something to what Ashish ji. When I was going through my ढैया तो ऐसा लगा, सब लोग मुझे बोल रहे थे अरे तेरे पास सब कुछ तो है, लाइक बच्चा है, करियर है, गाड़ी है, घर है, तो किस बात का रोना? They don't understand the inside turmoil that we're going through. एग्जैक्टली, उसको अगर आप मैनेज कर लो, थिंग्स विल बी मैनेज्ड। ठीक है, यस हेमा जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, मे बी दिस इज लिटिल डिफरेंट। सर गुरुजी, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि सैटर्न एंड सन की नहीं बनती है बिकॉज सन इज रिप्रेजेंटेड एज फादर एंड उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, बट व्हेन वी आर सेइंग साढ़े साथी या दैया, इट इज हैपनिंग ऑन मून। मून को हम मन से मन को भी डिफाइन करते हैं। मून इज ऑल्सो कॉल्ड मदर, राइट? बट स्टोरीज जो हम लोग देखते हैं उसमें सैटर्न एंड मदर का तो कुछ अच्छा रिश्ता होता था। बिल्कुल, देन व्हाई वी डोंट कंसिडर दैट, लाइक बिकॉज वी, व्हाई? क्योंकि हम एक आइडियल चंद्र को नहीं ना रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक आइडियल चंद्र को रिप्रेजेंट करें तो साढ़े सती तो सबसे अच्छी चीज है। हाँ, वह आपको इतना एक गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट करती है साढ़े सती। मैंने जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, 90% स्टूडेंट्स आर इन साढ़े सती व्हेन दे आर लर्निंग ज्योतिष। They are learning, lot of things, mantra shastra and everything. So, bad times make good people, good times doesn't make good people, right? So that's where the problem is. Like, हमें लगता है कि खुशी और हमारे पास गाड़ी है, पैसे आ रहे हैं, वाइफ हमारी बात मान रही है, प्रमोशन हो रही है, ये हमारा अच्छा टाइम है। जबकि अच्छा टाइम क्या है? जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में डेडिकेट कर देते हो। और वो कलयुग में इंसान तभी करता है जब उसको बहुत दुख होता है, जब उसके हाथ से चीजें जाने लगती है, तो उनको भगवान की याद आती है। सो टेक्निकली, सैटर्न एंड मदर मून आर ट्राइंग टू सेट यू राइट, विच यू डोंट वांट टू। Guruji, one more question regarding the second phase of साढ़े साथी। Like आपके last lecture में बोला था कि वो it sits on our head and we go black. Yeah. And for the first phase, for example, taking as a job, we try to move different jobs, and which is Yeah. not good. But if we do, because I'm getting second phase and I'm getting few offers, is it advisable to move in different jobs Please in the see all second the pros phase? and see all the pros and cons of the offer that you're getting, then go ahead. Okay, okay, very sure. Thank you. Okay. Thank you. Yes, Dr. Shruti. हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी। तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर अष्टम का ढैया चल रहा हो और हम सैटरडे की फास्टिंग शुरू करें, तो वो काउंटर, मतलब शुड वी स्ट्रेंथन द शनि और नॉट? See, जब भी हम फास्टिंग करते हैं ना, we don't give any strength to any planet, first of all. Okay, I'll be very honest with you. Whenever you do fasting, okay, in entire shastras, in entire classics, there's no definition of fasting. Okay, फास्टिंग क्या करती है? आपकी जो प्राण शक्ति होती है ना, प्राण शक्ति, उसको एनहेंस करती है, राइट? आपको सात्विक बनाती है। When you are fasting on Saturday, that means you are respecting Shani. When you are fasting on Tuesday, you are respecting Mangal. When you are fasting on Thursday, you are respecting Guru. Now, when you respect me, are you making me stronger? No. What are you doing then? If I'm already stronger, or if I'm already weak, right? And suppose I'm Saturn and you're fasting for me, you're just respecting me that very day, right? So what happens with this is that you get a prana shakti. Planet is not going to benefit you, or planet is not going to give you some reward for fasting.
But again, with fasting, you get confidence, you get prana shakti, you get satvikta to face the situation. It is just like an anesthesia that, you are being cut, but you don't feel any pain. You get up and see that your operation is done. That is what mantras do. That is what fasting do. Say they don't cure you, but they give you that relief, that you get. So it is not कि आप शनि को strengthen कर रहे हो, weak कर रहे हो. आप अपने आप को इतनी strength दे रहे हो अपने ढैया के अंदर कि it will make your life smooth. And especially since you're doing, Saturn's, fast, which is on Saturday, that means you will get strength against ढैया, particularly ढैया. Right? तो वो उस तरफ मूव करता है. So this is the exact significance of fasting. So no planet gets energy because हमारी औकात ही नहीं है कि हम फास्ट रख के शनि को एनर्जी दे दें या शनि को स्ट्रॉन्ग बना दें. ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इन्होंने ज्योतिष को खराब किया है. जो कहते हैं ना कि शनि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप फास्ट रखेंगे, या गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अरे पागल हो आप लोग. कैन यू मेक शनि स्ट्रॉन्ग? कैन यू मेक जुपिटर स्ट्रॉन्ग? It is you can make your prana shakti strong, so that if there is a negative effect of Shani or Jupiter, that will not affect you, and Mother Nature start helping you out. So no strengthening or weakening any planet. It is you strengthening yourself. Yes, Sunny. Yes, Sunny. Yeah, Guruji, I have a question regarding like Saturn's avastha during these Sade Satis, right? So if Saturn is getting, say, combusted, it's debilitated, like can we expect like different results, right? Certainly yes. Certainly yes. Because there will be phases when sun will combust it. There will be like particular signs when Saturn will enter, it will go depleted. Right? So it is more chaos. Right? Saturn is giving you pain, but Saturn has no idea what kind of pain he should give you. When it is depleted, it is like directionless. So ऐसे circumstances में तो बिल्कुल ही confusing आपकी साढ़े सती निकलती है. So much of confusion. And when the things are अस्तंगत, तो आप एक restricted energy को और restrict कर रहे हो. So it is like a blast of restriction. Got it. Yeah, I just realized my moon is in Taurus. So I've gone through like one Sade Sati, like when I was growing up. Yeah. Yes, Vivek ji. Hare Krishna, Guruji. Actually, my question was same what Sunny asked regarding this combustion and bhava. Acha, very nice. Thank you. Yes, Preeti. Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna. Guruji, I wanted to know that what is the difference between to have a Sade Sati in the mid phase of your life and to be born in a Sade Sati? Like born in a Sade Sati is always good. आप बीमार हो गए, आपको इंजेक्शन लगते रहेंगे, आप माँ की गोद में हो गए, ठीक हो जाओगे. But having Sade Sati in mid of life, where you have responsibilities and where you have commitments from family, it is very difficult, Preeti. Very difficult because you have sense. When you don't have a sense as a child, बुरा time निकल गया पता भी नहीं लगा. लेकिन as a mature person, when you have commitments and then you have a Daiya or Sade Sati, honestly speaking, you're not worried about yourself. You're worried about other people in life, which is your family. That is where the problem is. Like Guruji, is it not a karmic birth like I wanted? It is a karmic only. Every single thing is karmic only. Whether you get Daiya at the time of your birth or you get the middle age, it's all karmic. Okay, Guruji. Thank you, Guruji. Okay. Yes, Nitya, you have another question? Guruji, I wanted to ask if in our natal chart, if Saturn is retrograde, will it have an effect on Sade Sati and Daiya? And if yes, what kind of results we can anticipate, Guruji? It's like halal. Retrograde planet is like further slow torturing pain. Whenever a planet is set retrograde, it is behaving like a halal. An exalted planet behaves like a Chitkara, right? Because very, very much aware of what that planet has to do. So retrograde planet, things will further slow down during the Sade Sati, because Saturn is bringing that retrogression energy, during the transit in your horoscope. Basic energy of Saturn, it's like,
you have this main energy coming from a dam. From a dam, it is going to an electricity house or a powerhouse, and from powerhouse, it is going to a small transformer in your area, and from that transformer, you're getting the electricity at your home. So that transformer is retrograde basically. The electricity is coming direct, but since that transformer is regulating the amount of energy that should go, in your home, that is what retrograde planet does on your horoscope. So if it is retrograde, it's going to slow down, it's going to have cheshta bal, and you're going to feel so much obsessive during your sadasati. बहुत ज्यादा obsessive feel करोगे आप. Okay. Thanks. Shruti ji, you want to say, Dr. Shruti, you want to say something? I think hand is up. Yeah, hand is up. Yeah. Okay, high five. All right. So, all right. So let me see what questions they're written. Guruji, I have a question. बोलिए. So can you kindly explain again that अभी जो धैया है वो 8th में और मतलब सॉरी कैंसर में और स्कॉर्पियो में कैसे है, और वो just reassuring that वो 2.5 years रहते हैं, right? Yeah. And so can you just explain how do we know that they are in Cancer and Scorpio right now? Oh, how do we know that? See, आप अपनी कुंडली देखोगे, कुंडली में अगर चंद्रमा 4 नंबर में लिखा हुआ है तो चंद्रमा कैंसर में है, और अगर that I know, पर अभी धैया वहां पे कैसे, मतलब अभी कैसे हाँ, तो वो देखो ना, आज की कुंडली बनाओ ना, ये देखो, आपको ये प्रेशरलाइट सॉफ्टवेयर में जाओगे, इफ यू मेक टुडेज हॉरोस्कोप, दिस इज टुडेज हॉरोस्कोप प्रश्ना, तो आपको आज की पोजीशन पता लग जाएगी ना. शनि आज कहाँ पे है? 10 नंबर में है, तो शनि अभी जनवरी में यहाँ आ जाएगा, तो आपके चंद्रमा से जो है 4th हाउसेस आगे चला जाएगा, तो मीन्स आपका ढैया शुरू हो गया. तो सैटर्न वो आज का गोचर, आज का ट्रांजिट की, आज सैटर्न कहाँ है, तो आज की कुंडली बना लो, इसी समय कुंडली बना लो, तो आपको पता लग जाएगा. ओके ओके, थैंक यू. Okay. Ruchi ji saying in general it helps make the mana or the moon element strong based on my, yes, of course. Ashish Guruji, if we interpret via moon chart, 12th house is feet, ascendant is head and mind. That is correct. That's another way of thinking. Fantastic. Ruchi ji, fasting is kicks in the body, autoimmune system, body, sattvic defenses and trick. Very true. That's the real definition of fasting. Saturn Sadasati in Sun Mahadasha, but like Saturn placed with friend sign like Guru, how can we interpret? Guruji, please advise. See, whatever the Saturn is in friendly sign or a non-friendly sign, the Sadasati will give you some sort of lesson, especially in Sun Mahadasha. When Saturn take control over your mind and feelings, it is going to be severe and problematic. True fasting or mantra and prayers help us miraculously. Till the last class of Guruji on Saraswati, I was not aware that we should not change job, but somehow I was fixed in my current job, even though I was getting good offers. Thank you so much, Guruji. Thank you, Ashirwad. Guruji, I have no strength to fast entire day, even though it feels like I'm fasting almost every day, taking my breakfast close to the lunch time. It is still fasting if I could eat fruits, take protein powder, almond milk, avoid eating rice, roti, and on Saturday, or should be eating nothing? No. You can eat fruits. You can take almond milk, but you should not take protein powder. So you should not take a whey protein. Although whey is from the curd, whey is actually the curd, dahi se bana hua protein hota hai, whey protein. But आजकल में कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं, कुछ चीजें डाली होती है, उसमें थोड़ा सा डर रहता है कि उसमें कोई अन्न ना हो, थोड़ा सा कार्ब्स ऐड करने के लिए उसमें. So you can take whole day, you can take fruits, almonds, dry fruits, milk, you can take all these things, no problem. Guruji, thank you, Guruji. In the protein powder here, we are getting quality ones without whey, like fermented grains. Is that allowed or should not allowed? So, okay. Not allowed. Grains जहाँ भी आएंगे, it is not allowed. Okay, so यहाँ पे तो जो whey protein मिलता है वो तो सिंपल ही होता है. whey protein जो यहाँ पे इंडिया में we don't have
प्रिविलेज, और जो प्रिविलेज है भी है तो उसमें डुप्लीकेसी का डर रहता है थोड़ा सा. Okay, ladies and gentlemen, so that's it